और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं और उसके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम दिव्या है, मैं प्राथमिक शिक्षिका हूँ और मेरे साथ नीलम मैम डीडीटी हिंदी। आज हम दोनों सुविचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उसका अर्थ भी बताएंगे। गुरु कुमार कुंभ है, गई गई काहे खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। इस सुविचार का अर्थ है कि गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य कुम्हार की उस मिट्टी के समान है। जिस प्रकार एक कुम्हार अपने घड़े को सही आकार देने के लिए मिट्टी को बाहर से चोट मारता है और अंदर से एक हाथ से सहारा देता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को सफल और अच्छा नागरिक बनाने के लिए अंदर से चाहता है कि अब उसका शिष्य सफल हो और बाहर से कभी कभी शक्ति का व्यवहार करता है। इसी प्रकार प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को सदैव सफल और अच्छा नागरिक बनना देखना चाहता है। धन्यवाद। मैं अपना प्रदर्शनी है और मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है। आज हम आपके सामने समाचार प्रस्तुत करेंगे। पहले कुछ राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षकों पर भावी पीढ़ी के मस्तिष्क को पोषित करने और उनके समग्र उत्कृष्टता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में त्रिपुरा के 2 अलगाववादी संगठनों में समझौता हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पोषण ट्रैकर बच्चों के पोषण विकास का मूल्यांकन करता है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रुनेई के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर पहुंचे, जहां आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। धन्यवाद दीपिका जी। अर्थव्यवस्था, खेलकूद समाचार और मौसम संबंधी जानकारी। चलिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के में वृद्धि दर के अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से जुड़े स्टार्टअप को सरकार बढ़ावा देगी। कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने एग्रीश्योर योजना का उद्घाटन किया। चलिए रूबरू होते हैं खेलकूद समाचारों से। बांग्लादेश जाकर 2 टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का चयन जल्द ही किया जाएगा। पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक में 12 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक के साथ भारत अब तक कुल 52 मेडल जीत चुका है। अंत में मौसम संबंधी गतिविधियां। आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ साथ मौसम ठंडा होने के कारण तापमान गिरकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। Of Leh, Ladakh and the northeastern states to the deserts of Rajasthan and the islands of Lakshadweep and Andaman and Nicobar, our teachers are steadfastly keeping the flame of education alive. The Kendriya Vidyalaya Sangathan expresses heartfelt appreciation to all its teachers for their remarkable contributions. We look forward to this sacred flow of learning, continuing to enrich life and
गया। आजादी से है प्यार जिन्हें देश से है प्रेम, कदम कदम से और दिल से दिल मिला गया। आज भी रंजिश मिटा गया, आज भेदभाव सब भुला गया। आजादी से है प्यार जिन्हें देश से है प्रेम, कदम कदम से और दिल से दिल मिला गया। मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है मिलके चलो। मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो। जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिलके बढ़े आग के। लगा चिराग से जले चिराग, ऐसे चलो भेद तेरा मेरा जाग के। जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिलके बढ़े आग के। लगा चिराग से जले चिराग, ऐसे चलो भेद तेरा मेरा जाग के। मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है मिलके चलो। ये जिंदगी का राज है मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है मिलके चलो। जिंदगी का राज है मिलके चलो। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते, दीपज्योति नमोस्तुते। श्रीगणनाथं भजाम्यहं, श्रीकरं चिन्तितार्थफलदं, श्रीकरं चिन्तितार्थफलदं, श्रीगणनाथं भजाम्यहम्। रञ्जितनाटकरङ्गभूषणं, सिञ्जितवरमणिमय भूषणं। रञ्जितनाटकरङ्गभूषणं, सिञ्जितवरमणिमय भूषणं। रञ्जितनाटकरङ्गभूषणं, श्रीगणनाथं। थैंक यू। बच्चों को ये बहुत अच्छा आइडिया आया है, जो रिटायर होने वाले टीचर्स को सम्मान करने के लिए यहाँ बुलाए गए हैं हमारे इंदु शंकर मैडम और विक्टर सर। ओम अश्वदायी च बोधायी धनधायी महाधने, धनम देवि सदां देवी सर्वकाम्यार्थसिद्धये, पुत्र पौत्र धनं धान्यं मत्स्यश्वाजाभिगोर्धं, प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तं करोतु माम्। चंद्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रीमैश्वरीं,
चंद्र सूर्याग्नि सर्वाभांसि महालक्ष्मी रूपास्महे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते। ओम शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति। तो थैंक यू बोलना ही चाहती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायरी कर दूँ, तो आप सब मेरा शायरी सुन लीजिए और ये मेरा ग्रैटिट्यूड समझ लीजिए आपके लिए। जीवन में जो राह दिखाए, जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह चलना सिखाए, सही तरह चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता, काश मैं उन जैसा बन पाता, काश मैं उन जैसा बन पाता जो मेरी शिक्षक कहलाते। थैंक यू सो मच टीचर्स। तो आज टीचर्स का स्पेशल डे है, तो टीचर्स के टैलेंट भी तो बाहर आने चाहिए, राइट? सो नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम कृष्णा सर ऑन द डायस। అన్ని కట్టుకో కొంగుగేసి చుట్టుకో కోటి వన్నెలున్న దానా అందమంతా ఇచ్చుకో అందినంత పుచ్చుకో వాళ్ళు గల్ల పిల్ల దానా తీరాలి చెట్లు సాగాలి ముచ్చట్లు సిగ్గుల్లో తేలిపోవాలి ముచ్చట్లు కొంటగాండి కట్టుకో కొంగుగేసి చుట్టుకో కోటి వల్లెలున్న దానా అందరినీ దోచే దొంగ నేనేలే నా గుండె దోచుకున్న దొరసాని నీవెలే చిన్నారి మైనా చిన్నదానా నేగాలం వేసానంటే పడి తీరాలెవరైనా బంగారం వంటి సింగారం నీదే అందం సొంతమైతే లేనిదేది లేదే కొంటగాండి కట్టుకో కొంగుకేసి చుట్టుకో కోటి వన్నెలున్న దానా అందమంతా ఇచ్చుకో అందినంత పుచ్చుకో వాళ్ళు గెల్ల పిల్ల దానా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. और माय फ्रेंड्स हु वांट्स टू कम, आई रिक्वेस्ट विश्वनाथ टू कम ऑन टू द डायस। दिखाने के लिए मैं प्लीज हैव दिनेश सर ऑन द डायस। जोरदार तालियां। खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है मधुवन खुशबू देता है सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल सच की राहों पे चलता चल दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है मधुवन खुशबू देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान का भंडार हमें दिया, ज्ञान का भंडार हमें किया भविष्य के लिए तैयार हमें किया भविष्य के लिए तैयार हमें है आभारी उन गुरुओं के हम है आभारी उन गुरुओं के हम जो किया कृतज्ञ अपार हमें दिया ज्ञान का भंडार हमें किया भविष्य के लिए तैयार हमें है आभारी उन गुरुओं के हम जो किया कृतज्ञ अपार हमें। थैंक यू सो मच। जब आए पहली बार नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार कामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार कामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो
कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, दामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। मुश्किल राहों पर गिरते उड़ते और संभलते हैं, मुश्किल राहों पर गिरते उड़ते और संभलते हैं, हम तक भी जाए देखो वह कभी न तकते हैं, हम तक भी जाए देखो वह कभी न तकते हैं, वह टीचर ही तो हमारा साथ चलते हैं, वह टीचर ही तो हमारा साथ चलते हैं। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, दामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। थैंक यू। उषा एस.के. राजेंद्र प्रसाद सर। सोनी एस.टी. बाबू सर। श्रावणी आतिरेश्वर। स्टेजर एस. भारत सर। And Harshika as Manisha ma'am. Shravan as Farah. Rohit as Srinivas sir.
water. Cup, C-U-P. What kind of cup does it hold water? It's cupcake. It has one eye but can't see. It has one. Who's a hero? Manisha ma'am. Abhi gaana focus on Manisha ma'am. Now, king of all school supplies. बहुत आसान है कि नॉर्मल हर एक टीचर के हाथ में दिखता है. बोलिए. King of all school supplies, like stationery and all. It's a ruler. See ruler, the word, right? मजा आया? Ruler is not being used. पहले होता था. और अब नाम तो देखिए ruler. First of all, 12th class and all my dear colleagues. Yeah. First of all, it's a very special day for me. The day the children have felicitated was a surprise given by 12th class children, and of course I know the hand behind this program. I would just like to speak some words because it is very, very important to speak on the Teachers' Day. I request all the children to please lend your ear to me, just for a few minutes better. I know it is very hot, and I also request my colleagues to just lend your ears. First and foremost, I would like to say that I am a teacher by choice, not by chance. I just wanted to become a teacher. I remember when I was very small, I used to play also as a teacher in the house, being the eldest one in the family. I used to tell my sisters and all, बैठ जाओ रे, ऐसे पढ़ाती हूँ करके I used to tell them. So later on, once I finished my intermediate, I wanted to become a teacher, so joined Regional College of Mysore because that is a specific institution where they train for the teachers. So I would like to say that whatever today, my career which is going to end in the next year, today whatever I am as a teacher is my teachers only. They have played a very important role. My primary teacher, still now I remember my primary teacher named Sunita ma'am. She was in Air Force Station, Tejpur, Assam, when I was studying my second and third standard. The way she used to teach us all those sentence formations and play with us. I remember whenever any new thing used to be there, I still remember like a film it is. She used to dress up like that for a special poem, especially poems and all when she used to teach us. She used to dress up like that. Once I remember, she had made herself like a flower and then she taught us about that. I still remember those incidents. That is why when I was seeing the movie of Amir Khan, Tare Zameen Par, how he depicts himself to those children, I got there's nostalgic about that teacher only. Then when I came to my intermediate 11th and 12th, today whatever I am as a science teacher is the role model of is my Malayamal madam. PGT biology she was. I can never forget her. Today you people tell na ki ma'am is like a motherly. She was like that. You won't believe beta. बायोलॉजी लैब में प्रैक्टिकल कराती रहती थी मैडम, माइक्रोस्कोप में ऐसे सेट करती रहती थी स्लाइड्स वगैरह, हम जाके उनका साड़ी देखते थे कैसा है वैसा है. शी नेवर सेड वंस ऑल्सो क्यों कर रहे हो, छोड़ो मेरे को करके, नेवर. एंड वन अ वंडरफुल टीचर. Ours was the first batch in Kendriya Vidyalaya IAF Avadi as a science this stream to pass out, and I remember the farewell party, the way we had cried, not because leaving our classmates, leaving that ma'am. She has made so much mark on me that when my father asked me what do you want to go for degree karke, so I said I will take biology only, I will study biology.
my this all because those days 11th 12th it was not like BPC or MPC, it was MYPC, everything you have to study. So after that only we had to. So she made a real mark on me. Then when I came to college, in my degree college, there was 2-3 teachers, Jennifer madam and Dandapani sir, who was teaching us psychology to us karke. The way he used to teach psychology, we used to be very frank, at that age he was like those days when I was doing, he was around 55 or 60, he was tall, slim man, and we at that age also we used to have crush on him because he used to resemble exactly like Amitabh Bachchan, and he used to bring a flashcards, and that flashcards he used to write the points and he used to teach us, and that sir has made a maximum mark in my career because he taught us, and he told one point: teach how much ever you are expert in your subject, you should never enter your class without preparation. How much ever expert, even if you have next period also, have a look, have a glance in your chapter, what points you have to going to speak, that will make you give a very good performance in the class, and you will not be losing any point. And he was a role model, and from that time onwards I had always been an admirer. Once I came to MSc, when I was doing my regional college Bhubaneswar, there was Dr. Ismail, now also he is there. He was the role model for me to how to teach life science or how to teach. He made the hesitation to go out from us, being a female, how to teach a reproduction chapter in a class. Because when I was in KV, I saw there were teachers who were not able to touch that chapter. Being a teacher, they were not teaching us properly. So he brought us, you have to teach the particular chapter as a biology teacher, not there as a male or a female. And that is what made me so confident. So today, whatever I am in my career, it's because of my teacher only. So children, I would like to say to one of you, all of you, one thing remember, beta, always have a respect for your teachers. Remember that your parents are first teacher, your parents are first teacher, and your teachers are first parent. It is always there. Once you enter into the school, we are only your parents. We only look after you. Come to us with all your problems. Then only you call back or say to your parents. Similarly, when you are at home, your parents teach you how to behave, how to do. So they are teachers. So life में दो जन को कभी नहीं भूलना है. That is your parents and your teachers. And parents थोड़ा बहुत selfish हो सकते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कल मेरा बेटा या बेटी बड़ी होगी तो थोड़ा तो हम लोग को देखभाल करेगी. But teachers are the most selfless. You can see. They never expect कि कल मेरा स्टूडेंट बड़ा होके IAS ऑफिसर बनेगा तो मेरे को बुढ़ापे में देखभाल करेगा, या डॉक्टर बनेगा तो मैं जब कोई बीमारी से होंगी तो मुझे फ्री में करेगा. No teacher expects that. So always have your memories and respect for your teacher, whether it is a primary teacher or a secondary or whoever it is, because as in the morning principal sir was telling, very true. I have seen, I myself have seen my career. एक बच्चा 5th क्लास पढ़ करके आ जाता है, इसी स्कूल में रहता है और अपने 5th क्लास के टीचर्स को देख के विश नहीं करेगा. He thinks he is now greater than, after all he is a primary teacher only ना, मेरे को क्या विश करना है. एक बच्चा 10th क्लास पास करके 11th 12th में आता है, बगल का क्लास में रहता है, they don't wish the thing कि now we are 11th class students, for us PGTs are important. I'm not telling here about that you children, but most of the children have this. You would have not learned ABCD if your nursery teacher would have not taught you. Isn't it better? So similarly, respect your primary teachers, whether equally, they are teachers. And I always tell in my class, even teachers you छोड़ दो, एक teacher का भी बात अगर नहीं समझते, you don't want to give respect for the post, give respect for that age.
They are elder to you. Even a primary teacher is elder to you. You are hardly 18 if you're 12th class, and there must be at least 21, 22 or 24 youngest primary teacher मान लो, तो भी they are elder to you. Respect for that age, and that is very, very important. And my sincere, I hope that my colleagues will not take it this to the younger generation of the teachers. I will tell that have a teacher is a service. We should not feel that it is मेरे को हर महीने के एंड में कितना सैलरी मिल रहा है, नहीं, एक सर्विस है. Once the parent is sending a child to you, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा जब आपकी क्लास में एक पेरेंट वहां गेट के बाहर भेज देता है, he trusts you, they trust you that मेरा बच्चा जो है 100% will be looked after by the teacher whoever it is. So if you take the teaching as a job, then it will remain as a job only. You have to take it as a service, because इससे ज़्यादा we say that doctor is a noble service. There are so many noble services, but to make a doctor, we are only there. हम लोगों ने उन लोगों को आज वो करियर बनाने को, डॉक्टर या लॉयर बनाने को दिया है करके. So I know you people have, you younger generation of my teachers, you have a long way to go. You have long way to go. So make your, if you have chosen this as a to become a teacher, make a place in your children's heart. उससे बड़ा award कोई भी नहीं है, कितना भी president award भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, but whatever you make your place in the children's heart will be the best. एक प्राइमरी बच्चा आकर के जब सुबह सुबह, मेरे को कभी कभी लगता है जिस बच्चे को हम सबसे ज्यादा डांटते हैं ना, वही नेक्स्ट डे मॉर्निंग सबसे पहले वही आके गुड मॉर्निंग बोलता है. एंड आई फील समटाइम्स वेरी गिल्टी अबाउट दैट. In my class, 10th class, this time one batch, I don't want to name that girl. One girl is there presently. 9th class में when she was there, I don't know मैंने कितना उस लड़की को डांटा होगा. कभी काम नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, and all those things करके. Why? To improve her, of course. Roaming, she's always roaming. On 10th, that day on 1st August when it was my birthday, she was the one girl who brought the gift. You won't believe, I felt so guilty to take that gift. And when I went home and opened that gift, I was so surprised that she has put such a beautiful pictures of mine from where she had collected and made a collage and given to me. I was telling my husband that I felt so bad to take this gift. मैंने सबसे ज़्यादा उस लड़की को डांटा होगा, and she was the one who brought. So that is the best quality of the children. They just forget. हम लोग की तरह उनको egos नहीं रहता है. So that is what we have to do. That's all. Just I wanted to speak out for this day. And I am really very, very happy to tell all of you that I had a wonderful career in KVS of 35 years and very contented career. I am very, very happy as a teacher. मैं जो चाहती थी मैंने अपनी मर्जी से किया है, बच्चों को बनाया. I know that I have thousands of children have gone under me, and now they are in very good post. When I'm seeing my WhatsApp flooding with Happy Teachers Day today, I think that after going home still I have to keep on replying them करके. And now thanks to Facebook and Instagram that we get so many this. So I'm very, very happy to be a teacher, and I know that my children, wherever they are, they will be flying with high colors. Thank you so much for giving me this opportunity, and thank you for the given respect to the senior most teachers of the Vidyalaya, who is going to retire, myself and Indu Madam. And I thank all class 12 students for their sincere efforts in making the Teachers Day a memorable day for me as well to all the staff members of KB and Srinagar. On behalf of Principal Sir, I thank all the student teachers and staff members for their cooperation to make the Teachers Day a grand success. Before I conclude, I also want to share few words for younger generation, particularly those who have joined newly, those who are studying 12th class students.
All 12th class students, please would you come forward for their sincere efforts in making the Teachers' Day a memorable day. When we say this word, it is not for the youth, it is for the students. Are you able to hear or not matters much? And youngest teachers, I want to speak few words. We know very casual word belief. The word belief. All the teachers, those who are willing to come, please come. Simply they announce means nobody is coming. Please come forward and show your willingness. Happy Teachers Day. मिलेगा सर, केक मिलेगा सर स्पून है प्यार से डांस